Hello class 9. I hope you all have solved all the questions from exercise 3A of the chapter expansions. Now in this video we are going to start a new exercise, that is exercise 3B. And before starting the exercise, I want you all to know the important formulas or identities which you are going to use in this exercise. So let us see some of the important identities. These all identities you are going to use in your exercise 3B. So before starting any of the question, before solving any of the questions, write all these important identities in your copy. Let us see the first formula, a plus b whole cube. It is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. Okay. Second is a minus b whole cube. It is a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. Okay. Third is a plus 1 upon a whole cube. It is a cube plus 1 upon a cube plus 3 into a plus 1 upon a. Okay. Fourth is a minus 1 upon a whole cube. It is a cube minus 1 upon a cube minus 3 into a minus 1 upon a. Fifth is a plus b into a square minus ab plus b square equals a cube plus b cube. Sixth is a minus b, a square plus ab minus plus b square. It is a cube minus b cube. Seventh and the last is a plus b plus c into bracket a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac. It is equal a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. So these are all the formulas or important identities which you are going to use in this exercise. So write it down in your copy and before solving any of the questions. Okay. Let's see the first question. Question number 1, third part. You have to expand. The question is a 2x plus 1 upon 3x whole cube. 2x plus 1 upon 3x whole cube. Okay. So direct formula पे question based है a plus b whole cube. What is the formula? A cube plus b cube plus 3ab into a plus b. So simply put the values. A cube, a plus b, ये a plus b की value a cube 2x cube plus b cube 1 upon 3x whole cube plus 3ab 3 into a into b into a plus b. Okay. 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है. 2 का क्यूब क्या होता है 8x क्यूब प्लस 1 अपॉन 3 का क्यूब इज 27x क्यूब प्लस 2 is left here 2 into 2x plus 1 upon 3x. After that next step में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का अंदर. So it will be 8x cube plus 1 upon 27x cube plus 2 to the 4x plus 2 1 2 upon 3x. अब इसको रीअरेंज कर देंगे x डिसेंडिंग ऑर्डर में. So x क्यूब है सबसे बड़ा 8x क्यूब. आफ्टर दैट स्क्वायर नहीं है, x में स्क्वायर तो है नहीं किसी टर्म में. So आफ्टर दैट 4x plus 2 upon 3x plus 1 upon 27x cube. So this will be the answer. Okay. Now the next part is sixth part. Question number 1, sixth part. Here the question is 1 upon 2x minus 2 upon 3y whole cube. A minus b whole cube. फॉर्मूला क्या होता है a cube minus b cube minus 3ab a minus b. So values put करेंगे. A cube is a is this, b is this. Okay. So a cube 1 upon 2x whole cube minus b cube. B is 2 upon 3, 2 upon 3y whole cube minus 3ab 3 into a into b into a minus b a minus b. So 1 upon 2x minus 2 upon 3y. क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है. ओके. नाउ एक्सपैंडेड 1 upon 2 क्यूब क्या होगा 2 का 8 1 upon 8 x क्यूब माइनस 8 upon 3 का क्यूब 27 y क्यूब माइनस here xy is left xy into 1 upon 2x minus 2 upon 3
y. Now multiply xy. 1 upon 8 x cube minus 8 upon 27 y cube minus 1 upon 2 x square y plus minus plus 2 upon 3 x y square. Okay, now again rearrange it. 1 upon 8 x cube minus स्क्वायर की टर्म है यहाँ पे माइनस 1 upon 2 x स्क्वायर y प्लस x का टर्म है सिंपल 1 upon 2 upon 3 x y square minus last is 8 upon 27 y cube. So this will be the answer. See the next question, question number 2. If 4a plus 3b equals 10 and ab equals 2, 4a plus 3b की वैल्यू दी है 10 and ab की वैल्यू दी है 2. You have to find the value of 64a cube plus 27b cube. ठीक है. If we cube this one, so अगर हम इसको क्यूब कर देते हैं 4a plus 3b को अगर हम यहाँ पे क्यूब कर देते हैं तो a plus b होल क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा. But we have to cube it on both the side. So cubing both the side. क्योंकि एक साइड नहीं कर सकते, राइट हैंड साइड नहीं कर सकते या लेफ्ट हैंड साइड नहीं कर सकते. जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं वैसे क्यूबिंग भी बोथ साइड करते हैं. सो क्यूबिंग बोथ साइड इट विल बी 4a plus 3b whole cube equals 10 whole cube. So now it is a formula a plus b whole cube expanded a cube plus b cube plus 3ab a plus b equals 10 का cube is 1000. Okay, now solve it. 4 cube is 64a cube plus 3 cube is 27b cube plus 3 into 4 into 3 is 36ab. 4a plus 3b equals 1000. ठीक है यहाँ तक. Now we have to find the value of 64a cube plus 27b cube. क्वेश्चन में दिया है 64a cube plus 27b cube. Okay, and the value of ab is given. ab की वैल्यू दी है एंड हमको यहां से इसको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि ये भी हमें नहीं चाहिए. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a plus 3b? The value of 4a plus 3b is 10. Okay, now put the values 64a cube plus 27b cube plus 36 into ab. ab is 2 into 4a plus 3b is 10 equals 1000. Now solve it. 64a cube plus 27b cube plus 36 into 2 is 72. 72 into 10 is 720 equals 1000. Now transpose it. You will get the answer 280. So the value of 64a cube plus 27b cube is 280. Okay. Let's see the next question. Question number 5. Question number 3 and 4 are as same as question number 2 which I have shown. So solve it by yourself. I am solving question number 5 here. Okay. So if a plus 2b plus 3c is 0, show that a cube plus 8b cube plus 27c cube is 18abc. We have a plus 2b plus 3c equals 0. Now there are three terms. So if we transpose one of the term to the right hand side and cube both the side, it will form an identity. So transposing 3c here, so it will be a plus 2b equals minus 3c. And cubing both the side, it will form a identity a plus b whole cube equals minus 3c whole cube. A plus b whole cube का formula बन गया है. So solve it now. So a cube plus b cube plus 3ab into a plus b equals minus 3c is minus 27c cube. Okay. Now a cube plus 8b cube plus 3 into 2 is 6ab into now the value of 8 plus 2b is minus 3c. So put the value of a plus 2b here because we want only the a cube plus 8b cube plus 27c cube. So we have to eliminate a plus 2b also. So the value of a plus 2b is minus 3c. So put the value minus 3c equals minus 27c cube. Now multiply it. A cube plus 8b cube plus minus 6 3 is 18 abc minus 18 abc equals minus 27c cube. Now we know we want to find the value of
a cube plus 8b cube plus 27c cube equals 18abc. Now simply transpose it, interchange it. minus 18 को इधर हम ट्रांसपोज करेंगे, minus 27 को हम लोग इधर ट्रांसपोज करेंगे, and we will get the answer. So a cube plus 8b cube plus 27c cube and minus 18 7 इधर गया, 18 abc इधर गया, तो it becomes plus 18 abc. So this is the answer. Let's see the next question. Question number 6. If x plus 1 upon x is 3, find x cube plus 1 upon x cube. Here the x value of x plus 1 upon x equals 3 is given. We have to find the value of x cube plus 1 upon x cube. Now if we cube it on the both the side, it will become a formula. What is the formula? A plus 1 upon a whole cube. Formula क्या होता है? A cube plus 1 upon b cube plus 3 into a plus 1 upon a. Okay. Now क्यूब करने से फॉर्मूला बन गया, आइडेंटिटी बन गई, a plus 1 upon a whole cube. So and it is 3 whole cube. Now put the values in the formula. It is a cube, that is x cube, plus 1 upon a cube, that is 1 upon x cube, plus 3 into a plus 1 upon a into a plus 1 upon a equals 3 whole cube is 27. Okay. Now we want to find the value of x cube plus 1 upon x cube. X cube plus 1 upon x cube. So इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा. अब इसकी वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में? 3. Put the value. X cube plus 1 upon x cube plus 3 into 3 equals 27. ठीक है. Now again 3 into 3 is 9. X cube plus 1 upon x cube plus 9 equals 27. 9 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, so it will be 18. So the value of x cube plus 1 upon x cube is 18. Okay. Next question, question number 8. Here x minus 2 upon x is 6. X minus 2 upon x equals 6 is given. Okay. Find the value of x cube minus 8 upon x cube. Again cubing both the sides. X minus 2 upon x equals 6. Cubing both the sides, it will be a minus b whole cube equals 6 whole cube. So a minus b whole cube का फॉर्मूला क्या होता है? A cube minus b cube minus 3ab into a minus b. So a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. Okay, equals 6 cube is 216. Now x से x cancel out हो गया, ठीक है? And it will be x cube minus 8 upon x cube and minus 3 into 2 is minus 6, and the value of x minus 2 upon x is 6. Okay, equals 260. We have to find the value of x cube minus 8 upon x cube. Okay, only this one. After that it will be minus 36. So after transposing here it will be plus 36. So adding it will be 252. So the value of x cube minus 8 upon x cube is 252. Very easy answer. Okay. Let's see the next question. Question number 10. If a square plus 1 upon a square equals 23. A square plus 1 upon a square की वैल्यू दी है 23. You have to find the value of a plus 1 upon a, first part. Second part, a cube plus 1 upon a cube. Okay. Given क्या है? ये a square plus 1 upon a square equals 23. Find क्या करना है? a plus 1 upon a. So a plus 1 upon a. अब यहाँ पे जो given part है, जो क्वेश्चन में दिया है वो स्क्वायर है, क्यूब नहीं है. a square plus 1 upon a square. So a plus 1 upon a whole square का फॉर्मूला क्या होता है? a square plus 1 upon a square plus 2. ये पार्ट जो है गिवन है. क्यूब यहाँ पे हम नहीं करेंगे, ध्यान देना. यहाँ पे अगर यहाँ पे क्यूब होता, a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब, कुछ भी होता क्वेश्चन में क्यूब होता, सो वहां पे हम लोग क्यूब पुट करते. क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू दी है, a स्क्वायर दिया है, सो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करेंगे. तो स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस 1 अपॉन a
होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2। अब इसकी वैल्यू दी हुई है 23, तो पुट करेंगे 23 प्लस 2, दैट विल बी 25। नाउ a प्लस 1 अपॉन a होल स्क्वायर, a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू फाइंड करनी थी, सो इट विल बी अंडर रूट 25, ठीक है। सो द आंसर विल बी प्लस माइनस 5। नाउ द सेकंड पार्ट अगेन, अब यहाँ पे तो क्यूब है, a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब, सो a क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे इसका, ठीक है, जो आंसर आया क्यूबिंग बोथ द साइड, सो इट विल बी a प्लस 1 अपॉन a होल क्यूब इक्वल्स प्लस माइनस 5 होल क्यूब। ये फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस 1 अपॉन ए, ठीक है। अब a प्लस 1 अपॉन ए होल क्यूब हमको फाइंड करना है, a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब, ठीक है। अब a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 3, अब इसकी वैल्यू जो है ये यहाँ पे हमने निकाली थी, प्लस माइनस 5 पुट कर देंगे इक्वल्स प्लस माइनस 125, 5 का क्यूब है 125, ठीक है। नाउ 3 5 तो 15 इधर ट्रांसपोज किया तो आंसर क्या आया, प्लस माइनस 110। तो a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 110। सो दिस विल बी द आंसर। See question number 16. Find the product using suitable identities. Here the question is 3a plus 4b into 9a square minus 12ab plus 16b square. Now in the starting we have discussed this identity. The identity is a cube plus b cube. What is the identity? A plus b into a square minus ab plus b square. Okay. Now in the question left hand side is given. Okay. A plus b into a square minus ab plus b square. This portion is given. You have to find the right hand side. So simply put the values of a and b and solve it. Okay. And the value of a is 3a, value of b is 4b. So it will be 3a cube plus 4b cube. So the answer will be 27a cube plus 64b cube. Okay. So the value of 3a plus 4b into 9a square minus 12ab plus 16b square is 27a cube plus 64b cube. Second part is also same, but in that part you have to put the formula a cube minus b cube. In the place of plus you have to put the formula a cube minus b cube. Okay. Now let's see the question number 17, last question of this exercise. Simplify 3x minus 5y minus 4 into 9x square plus 25y square plus 16 plus 15xy minus 20y plus 12x. Okay. Now again we know the identity a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca equals a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. Here also the left hand side is given, you have to find the right hand side, but you have to it is very important that you should learn this whole identity. So the right hand side is we have to find the right hand side, so put the values a, b and c cube. So a, b, c, so a cube 3x cube plus b cube is 5y cube plus c cube is 4 whole cube minus 3abc, so 3 into 3x into 5y into 4. Now simply solve it. It will be 27x cube plus 125y cube plus 64 and minus multiply it, you will get the answer 180xy. So the answer is 27x cube plus 125y cube plus 64 minus 180xy. Okay. So children, this was all for today. Your second exercise, that is exercise 3b, has been completed now. Now I want you all to go through this video again and try to solve each of the question from this exercise in your notebook by yourself. Okay. And in the next part of this video, we will further discuss the next exercise, that is the last exercise of this chapter, exercise 3c. Okay. Thank you.